Hello, my dear student. This is your Pranjit sir. Welcome to the physics classes. Uh, this is my first video making with the pentap and laptop. Let's start. Okay. So this is one question from your NCT book of class 12 part. Finding the magnetic field at a point on the axis of current carrying circular loop. So for finding this one, we need to take one circular loop uh, and we need to imagine one axis on the circular loop. Let's start. So now see, suppose we have one circle. Okay. This is one circle. This is the center of the circle. It is a point P at a distance of x from center O. So now for finding the magnetic field at point P by using Biot-Savart law, we need to take a small current element from this circular loop. Suppose current I is going through this loop. So suppose dl is a small current element which is cutted from upper portion of this loop. It is dl vector. So now suppose it is a radius a unit of this circular loop. According to Biot-Savart law, if you are going to find out the magnetic field, so we need to join the dl portion line to the point P. Okay, so dl select a P point at distance, suppose S layer. Okay, this distance is suppose S. Okay, so now this dl and S in every case they are in 90-degree angle. Okay, so now what will be the direction of magnetic field at point P? And the magnetic field direction will be this direction. Okay, because this angle will be also 90-degree. Okay, so if this angle is phi, then this field will divide into two component because it will be also phi. Okay, this total angle is 90-degree. Okay, not this one is phi. How it is phi actually? See, if it is 90-degree, then it will be what? 90 minus phi na, this angle 90 minus phi. So what about this angle? This angle will be C, since S and dB, so this one is dB along PR, say. So now this angle will be C, 90 minus phi, so it will becomes phi actually na. So this question is very much important for understanding. Now dB will divide into two components. One will be the vertically upward direction, which will be dB cos phi, and along the positive axis it will be dB sin phi. Okay, so we need to take another small current element from the lower portion of this loop. Say it is a dl. Okay, so dl is cutted from the lower portion and vector is the direction which is acting into the plane of paper. Actually this is a 3D circle. Whenever you are going to see this one from side, okay, so actually circle is looking like that. Okay, and this one is center. अगर तुम इसके axis draw करोगे through this center, then it will be vertically upward and downward to the respect to plane of paper. Okay, now we can easily see this one ना. इसको तुम side से ऐसा करके देख सकते हो. Suppose it is here eyes. Okay, देख सकते हो, बट इसको जो देख रहा हूँ ये इसको मैं देख रहा हूँ, मतलब देख सकता हूँ इजीली रेस्पेक्ट टू माई पोजिशन. ओके, so now what will be the another component? So since this lower dl is cutted from the opposite diameter of this upper portion, then this angle will be same. Okay, according to similarity you can say this angle will be again phi. Okay, so similarly the magnetic field due to this dl portion which is cutted from lower part will be divided into two components. So one will be dB cos phi and another will be again dB sin phi. Okay, just लिख लो. So this is a complete diagram of this portion. Okay, so very much important. Just draw कर लो तुम. Okay, draw कर लो.
ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। Now, what is the Biot-Savart law? According to Biot-Savart law, the magnetic field at point P, due to the small current element dl, it will be what? It will be dB is equal to mu naught by 4 pi I dl क्रॉस एस लिया ना, देखो dl से लेके P पॉइंट तक डिस्टेंस जो है ये s है, ठीक है। सो इट विल बी dl क्रॉस s अपन s स्क्वायर, सो इट विल बिकम्स व्हाट mu naught by 4 pi I dl साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्चुअली जब तुम वेक्टर यूज करोगे इधर क्यूब देना है, ठीक है, क्यूब देना है इधर क्यूब, तो इधर एक एस आ जाता है, ठीक है, एस, देन लोअर साइड में ये क्यूब है, ये एस हम क्यूब कैंसिल करके ये आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 मीन्स 1, ओके, ये तो 1 आ जाता है, तो डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ओके। सो 1 को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ, so it is actually general expression of magnetic field, okay, of Biot-Savart law. So now, what will be the net magnetic field at point P? P point पे net magnetic field क्या होगा? P point पे जो net magnetic field होता है, it is due to the dB sin phi and dB sin phi, which is acting positive x-axis, okay. बट ड्यू टू दिस dB cos phi एंड लोअर पार्ट में dB cos phi, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बिकॉज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म दे विल बी इक्वल, बट ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल बी कैंसल आउट एट P. So only we have the magnetic field at point P due to dB sin phi, which is acting positive x-axis, okay. So now what will be the magnetic field, net magnetic field at point P? So net magnetic field B will be integration of dB. अगर तुम ये small dl portion को ऐड करते हो जाओगे तो you will get net magnetic field at P, okay. Suppose तुम लोग 4 dl एलिमेंट ले लिया, तो dB sin phi 4 बार ऐसा मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलग है, दैट मीन्स इसको इंटीग्रेशन करते हुए सम आ जाते हैं इसका। सो देखो कैसे करते हैं। अच्छा, सो dB का वैल्यू इनपुट कर दो, dB इक्वल टू व्हाट, dB इक्वल टू म्यू नो, सॉरी इट विल बी dB साइन फाई, ओके। तो dB का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 फाई आई dl बाई एस स्क्वायर इंटू साइन फाई, ओके। सो व्हाट अबाउट साइन फाई? साइन फाई का वैल्यू क्या है? साइन फाई का वैल्यू क्या है? इधर से देखो, it is a one right angle triangle. In right angle triangle, if it is a good angle phi, then it will be height and it will be hypotenuse. So sin phi will be A by S. Understood everyone? Sin phi will be A by S. देखो म्यू नॉट I by 4 pi s square into sin phi का वैल्यू will be A by S and integration of dl. Integration of dl means what? Integration of dl means अगर तुम इसको स्मॉल पोर्शन को अगर तुम ऐड करते हो जाओगे क्या हो गया? अच्छा, ये जो dl पोर्शन है इसको तुम अगर ऐड करोगे तो you will get total length of this circular loop, okay, which is 2 pi a, okay. So integration of dl means what? 2 pi a. So it will be mu naught I into A by 4 pi s square into s cube, and it will be 2 pi a, okay. So net result will be mu naught I
देखो इधर से 2 पाई एंड 4 पाई काट दो, 2 रह जाएगा, फिर 2, so it will be mu naught I a square by 2 into s cube. S cube means what? The hypotenuse equal to height square plus base square, no? So it will be under root height square means a square plus base means x square whole cube. ऊपर देखो cube है, क्लियर? देखो फिर से देख रहा हूँ, इधर क्या है ऊपर, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल if it is hypotenuse then it will be under root square plus x square. Okay, अच्छा, so result will be mu naught I a square by 2 into a square plus x square whole की power 3/2, और रूट रहेगा तो ऊपर तुम हाफ ले सकते हो, हाफ इंटू 3 मीन्स 3/2. Okay, so now it is a expression of magnetic field on the axis of current carrying circular loop. But if you want to put another special case, so what will be the magnetic field at the center of the circular loop actually? तो जो सर्कल तुम ड्रॉ किया वो था एक्चुअली 3D फिगर. सपोज दिस इज ए 1 यूनिट ऑफ सर्कल, इसका सेंटर में क्या होगा? तो सेंटर में जब फाइंड करोगे तो इधर भी तुम डीआर पोर्शन काटना पड़ेगा तुमको, तो विच इज एक्टिंग अलोंग दिस टेंजेंशियल टेंजेंट, देन इट इज रेडियस ए, सेंटर ओ. इसके लिए जो फील्ड आता है दैट मीन्स तुम देखो इधर जो एस पॉइंट पी पॉइंट लिया था, ये जो एक्स डिस्टेंस है ये वो 0 हुआ तो पी पॉइंट विल बी फॉल ऑन द सेंटर. ओके, सेंटर पे आ जाता है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 करने पे ये पी पॉइंट सेंटर पे आ जाता है. तो सेंटर पे आ जाते हैं, दैट मीन्स इधर से इस इक्वेशन से अगर एक्स इक्वल टू 0 इनपुट करोगे तो तुमको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. ओके, तो एट सेंटर देखो, एट सेंटर एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इट विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपन 2 इंटू ए स्क्वायर. ओके, देखो ए स्क्वायर एंड होल टू दी 3/2, ये 2 एंड 2 कैंसिल होकर ए क्यूब हो जाता है. ठीक है, ए क्यूब हो जाता है, इधर से ए स्क्वायर एंड ए क्यूब कैंसिल होकर इट विल बिकम्स म्यू नॉट आई बाई 2a. ओके, दिस इज आवर रिजल्ट एट द सेंटर. थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन. इधर खत्म करता हूँ.